अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मैंगो चीज़ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 8 से 10 डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं और उन्हें मैं चॉपर में डालकर उनका क्रम्स बना रही हूँ। आपने उनको बिल्कुल फ़ाइन क्रम्स बना लेना। क्रम्स बन जाने के बाद मैं इनमें 4 चम्मच जो है ना मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके ना आप इसे एक साइड में रख लें। फिर आगे की तैयारी करते हैं। फिर आप 2 आम ले लें और उनके छिलके उतार कर तो उन्हें मिक्सी में डालकर उनकी प्यूरी बना लें। आप अपने मैंगो टेस्ट कर लीजिएगा। अगर तो ज़्यादा स्वीट हो तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगे कि थोड़े कम स्वीट है तो आप 2 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। ये काफ़ी स्वीट थे तो मैंने शुगर ऐड नहीं की। फिर ये मैंने 1 कप जो है डबल क्रीम लिया है और इसको आपने थिक हो जाने तक बीट करना है। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाले हैं और जो है ना थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस भी दिखाया, वो शायद मैं डाला था, वो शायद मैं दिखाना भूल गई।
थोड़ी थिक हो जाए तो फिर मैंने इसमें 100 ग्राम जो है क्रीम चीज़ ऐड किया और उसके बाद फिर से उसको मिक्स करके तो अच्छे से थिक कर लें। अब आपको इसे असेंबल करना है और सबसे पहले आपने जो बिस्किट का क्रम्स बनाए हैं उन्हें सबसे पहले नीचे लगाना है और अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वो जो बटर की वजह से वो सेट हो जाएंगे। उसके ऊपर आपने क्रीम जो तैयार की है उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल के डाली है, आप जैसे भी चाहें डाल सकते हैं। फिर आप क्रीम की लेयर लगाएँ और उसके ऊपर आपने मैंगो जो प्यूरी बनाई है वो डालनी है। Repeat these steps again. मैंगो चीज़ केक तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।